Welcome to the series of case discussion from Professor Shamsa Fiaz. The today's discussion will be on anterior ischemic optic neuropathy and primary open angle glaucoma case. Anterior ischemic optic neuropathy. It is the most common acute optic neuropathy in adults older than 50 years old and typically is supposed to cause irreversible vision loss. It is due to ischemia of the optic nerve head. The patients complain of sudden visual loss or field loss in an otherwise asymptomatic individual. Optic disc is usually edematous and pale, and altitudinal visual field loss is common. The exact cause of AION is unknown, but the associated systemic conditions may be hypertension, atherosclerosis, diabetes mellitus, migraine, Takayasu disease, etc. The treatment is not proven yet, but corticosteroids, both systemic and topical, are being used normally. Primary open angle glaucoma is a glaucoma or a type of glaucoma where characteristic visual field abnormalities and raised intraocular pressure are seen in the presence of open anterior chamber angles. This leads to an optic neuropathy that is chronic, progressive, and irreversible with characteristic acquired loss of optic nerve fibers. Primary open angle glaucoma POAG is called as silent thief of vision as patients usually do not present with any symptoms or visual complaints until late. The rise in anterior segment pressure gives counter pressure to the posterior segment, causing gradual damage of optic nerve fibers. Signs include increase in cup disc ratio more than zero point 0.5, narrowing or notching of neuroretinal rim, disc hemorrhages, and retinal nerve fiber defect. The treatment normally followed is both medical and surgical treatment. Medical treatment include intraocular pressure lowering topical and oral medications, and surgical treatment include laser trabeculoplasty or surgical trabeculoplasty. But optic nerve damage is usually non-reversible. This case is about a male patient of age 50 years, known case of diabetes mellitus since past 15 years, who had visited National Institute of Ayurveda Hospital IOPD with a complaint of dimness of vision and loss of peripheral vision since past 9 years. In these 9 years, patient had visited multiple hospitals all over India where he was diagnosed as a case of optic atrophy, anterior ischemic optic neuropathy, and grade 3 open angle glaucoma. The patient had undergone multiple treatment including steroid therapy, anti-glaucoma therapy, neurotonic medications. He did not get any significant relief. So the patient came to NIA Hospital IOPD on suggestion from a friend. When the patient first visited NIA hospital, he had peripheral loss of vision from right eye and dimness of vision in both eyes. On examination, the fundus of right eye showed pale disc and dull macular reflex. Left eye showed cortical cataract and posterior subcapsular cataract of grade 4. Fundoscopy could not be performed because of the hazy media. The visual acuity was 6 by 18 in right eye and 6 by 36 in left eye. Best corrected visual acuity was 6 by 6 partial in right eye and 6 by 36 in left eye. While the patient had come, relative afferent pupillary defect RAPD was positive in right eye and negative in left eye. Perimetry showed inferior altitudinal defect in both eyes. Patient was operated for cataract first in left eye and then right eye. After that, best corrected visual acuity was 6 by 6.
but the complaint of peripheral scotomas persisted. Perimetry, fundoscopy, and OCT assisted diagnosis was made as AION left eye and primary open angle glaucoma of right eye. The treatment given in NIA was various Kriyakalpa procedures including Netra Parisheka, Pindi, Nasya, Tarpana, Putapaka, along with oral medications. Within 3 to 4 months of treatment in NIA, patient started mild relief from symptoms, which gave hopes to the patient. After around 4 to 5 months itself, patient no longer had persistent scotoma. The field of vision was more wider and clearer. Now, the patient visits NIA every month for normal eye checkup, screening of IOP and vision. Patient does not have any complaints and is fully satisfied with the results. Next, we will be hearing directly from the patient. आपका नाम बताइए। मैं यशपाल कालरा जयपुर से। और आपको क्या दिक्कत हो रही थी? मुझे एलोपैथी ने AION नाम का आँखों में रोग बताया था, जिसको आयुर्वेद की भाषा में तिमिर कहते हैं। और उसमें आपको क्या होता था, दिक्कत क्या रहती थी? उसमें मेरे को राइट आई से बहुत प्रॉब्लम होती थी, पास से गाड़ियाँ निकल जाती थी तो मेरे को आवाज़ नहीं होता था, बहुत जगह डार्कनेस दिखती थी, समझ में नहीं आता था कि गड्ढा है कि समतल है। कितने टाइम से था ऐसा? ये 2009 से प्रॉब्लम चालू हुई थी मेरी। और यहाँ से पहले आपने कहीं दिखाया था? एलोपैथी के सारे बड़े अस्पतालों में दिखाया था, लाइक SMS, कैलगिरी, एम्स और आनंद आई हॉस्पिटल, अग्रवाल आई हॉस्पिटल, लक्ष्मी वैन हॉस्पिटल, विले पार्ले बॉम्बे, मोहन आई इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। उसके बाद मेरे को यहाँ NIE में एक कर्मचारी है मिस्टर यासीन खान, उन्होंने मुझे बताया कि आप NIA में आके एक बार दिखाइए। उसके बाद मेरे को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ NIA में, जैसे नश्य है, तर्पण है, पिंडी है, इस तरह की विधियों द्वारा मेरे को रोशनी प्रदान की गई। इससे पहले NIA से पहले आपने जहाँ भी दिखाया था वहाँ आपको क्या बताते थे? एलोपैथी में सभी डॉक्टर्स जिनका भी मैंने हॉस्पिटल का नाम लिया, उन सभी ने एक ही बात कही थी कि आपकी आँखों की रोशनी वापस नहीं आ सकती। और यहाँ आपने कितने टाइम लिए, आप ट्रीटमेंट कितने टाइम लिए? यहाँ लगभग मैं नवंबर 2017 से शमशा मैडम के पास ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, तब से आज तक मुझे फ़ायदा है, अच्छा फ़ायदा है। ट्रीटमेंट करवाने जब आपने NIA में ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके कितने टाइम बाद आपको फ़र्क दिखने लगा? मुश्किल से मुश्किल 3 महीने बाद मुझे आँखों में रोशनी दिखने लगती थी। और आप मैडम से, NIA स्टाफ से, अपने हमारे शाला के तंत्र के स्टाफ से कुछ कहना चाहते हो? बहुत अच्छा सहयोग है, अगर स्टाफ का सहयोग नहीं होता तो शायद मैं ठीक ही नहीं होता। और आप यहाँ के ट्रीटमेंट से संतुष्ट हो? बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हूँ। थैंक यू।